हाय गाविंदा पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत है। यार भारतीय स्कूल में रोज 20 लाख गरीब बच्चों को फ्री में खाना मिलता है। देख पूरी दुनिया को पड़ गए मिर्गी के दौरे। क्या बोल रहे हो भैया? 20 लाख बच्चों को मुफ्त खाना डेली का हाँ नहीं यार। हाँ, लेकिन अब ये वॉच कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे दे रहे हैं और ये कौन दे रहा है भाई साहब। 20 लाख बच्चे 2 मिलियन तकरीबन। हाँ 2 मिलियन। ये तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में हमें आइडिया लगेगा कि आखिर ये बोल क्या रहे हैं। 20 लाख अबे मुंह से कहते हुए कुछ हो रहा है तो 20 लाख। हाँ ना 20 लाख लोगों का क्या करते कैसे होंगे यार? यही तो मैं सोच रहा हूँ। लेकिन अब ये वॉच करते काउंट करते स्टार्ट। This is Akshaya Patra, the world's largest free school meal program. This kitchen alone makes enough biryani for 75,000 children daily. Across India, the foundation's 65 kitchens serve 2 million children every day in over 19,000 schools and has served over 3 billion meals since its inception in 2000, something which Vice Chairman Sri Chanchala Patidasa is very proud of. It's like feeding all of India 3 times. We visited a mega kitchen to see how they make vegetable biryani and moong dal payasam in such big batches. This mega kitchen is located in Bangalore, the capital of India's southern Karnataka state, and staffs 230 workers across 3 floors. We start on the top floor, where all of the food is cleaned, cut, and prepped. Every day, workers prepare the following day's raw ingredients, and then store the food in a cold room that can hold up to 5 tons of food. On an average day, we use about 25 ingredients in this kitchen. And one very important aspect in Akshaya Patra is the menu design. Today's menu includes vegetable biryani, an Indian rice dish that the kitchen prepares with a mix of vegetables and a house blend of spices. Workers begin by running the crates of prepped vegetables through these cutting machines. So because we are preparing large quantity of food and we have to do it very quickly and we have to do it very cost efficiently, we extensively use a lot of technology. This batch of biryani contains tomatoes, green peppers, cabbage, carrots, potatoes, and squash. If you look at these crates, every meal which goes to a child at least has minimum 50 gram of vegetable for a primary school child and 75 gram of vegetables for an upper primary school child. Alongside the vegetables, workers also portion and prepare rice for this dish. भाई सफाई कितनी है भैया? देखो ना, आपको लग रहा है कि 20 लाख लोगों को खाना ही बनता है? नहीं, ऐसे पता नहीं कर रहे, मुझे तो नहीं समझ आ रही है ये आटा है कि चावल है। The rice is then washed thoroughly with water before it's cooked. On an average day, the kitchen can handle about 7 tons of grains and 5 tons of dairy. The washed rice and pre-cut vegetables then move through a chute that connects to the second floor. This simple use of gravity is one of the key components of this facility, as it reduces the amount of manual labor and keeps things clean. The ingredients land into 51 of these stainless steel cauldrons, where the cooks use massive stirrers to mix everything together. Workers then close the lids and utilize a 2-ton boiler that generates steam to cook the food. So biryani takes typically an hour to make, right from pre-processing to finishing it. And the cauldron which you see here can feed about 1,000 children. For food safety and cleanliness, the vegetable biryani is temperature checked and logged. And next to each cauldron, a small stainless steel vessel stores a sample of each batch, which is then tested 24 hours later for microbial growth.
Once a week, children receive their lunchtime meal with a sweet treat. And here, moong dal payasam is being made. Moong dal payasam is a dessert, and children love dessert, being youngsters. So each of these cauldrons can handle about 1,200 liters of dal or lentils. 1,500 pounds of lentils drop down into each of the 6 cauldrons used to cook the dish. ये भी देखो अब वो नीचे फेंक रहे हैं, ये अब नीचे उसके अंदर जाएगा, जो बड़ा बेसन वो आई थिंक वो नीचे है, ये ऊपर फ्लोर के अंदर साफ करते हैं, फेंकते हैं और वो नीचे Milk and raisins are also added for texture and creaminess. ये देखो, ये तो मलाई नहीं लग रही है। Finally, jaggery syrup, which is an unrefined natural sweetener made from sugarcane, gets stirred into the cauldrons. Typically, moong dal payasam takes about 1.5 hours to 1 hour 45 minutes, right from boiling the moong dal till the final dessert is made. Once the vegetable biryani and moong dal payasam are finished cooking, workers transfer the dishes from the cauldrons into these carts, which are then taken to another large chute that connects to the ground floor. The food drops down, then gets portioned and packed into individual vessels for distribution. These are food grade vessels. Each of the vessels can handle food for about 85 to 100 children. And one of the important cornerstones of Akshaya Patra is hygiene and safety. So you can see each vessel where food is going to be stored is getting washed or cleansed with steam. Then they're passed down a conveyor belt and get loaded onto Akshaya Patra's custom-built buses called Buses of Hope. These are insulated vehicles which keep the food warm. Large quantity of food goes in each vehicle. Over a period of time, Akshaya Patra has developed logistics ability. So for example, from this kitchen, we have about 32 vehicles. We handle about close to 650 schools. And we are feeding about 75,000 children every day, though the enrolled strength is about 110,000 children. And that is just a single kitchen. When you include the 64 other locations across India, they feed over 2 million children daily. It had a very modest beginning. We started serving 1,500 children in the outskirts of Bangalore city in the year 2000, and gradually we saw there were more and more requests from the headmasters of the schools who would write to us and say, "We see your vehicle carrying food pass in front of our school. Can you please stop and feed our children?" And when we saw these requests, we kept increasing and scaling up our program. And that's how today in Bangalore city we serve about 200,000 children. So how does Akshaya Patra get its funds to pay for all of the free food they provide? So we get a certain amount of support from the government. We top it up with some more money that we raise from individuals and foundation to ensure that the meal we give to the children is hot, nutritious, safe, tasty, so that children are delighted to have a meal at noontime. Today, they serve 19,000 schools across 14 states and 2 union territories in India. Kitchen staff will create menus based on the students' preferences and feedback by area. For example, Akshaya Patra's kitchens in northern Indian regions can expect foods like roti or flatbreads. In southern India, rice is more widely eaten as a staple food, and the children love the rice-based dishes prepared by the foundation. నాకు బిసిబెళబాత్ అంటే ఇష్టం ఎందుకంటే చాలా బాగుంటుంది బిసిబెళబాత్ నాకు అమ్మమ్మ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది. Another important aspect of Akshaya Patra is we want to give what otherwise their mothers will give to them if they are at home and the mothers had resources. Of course, no one can replace a mother, but Akshaya Patra tries to come as close to what a mother can cook. ನನಗೆ ಪಲಾವ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಬೀನ್ಸು, ಕ್ಯಾರೆಟು, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ अच्छा टेस्ट
You know, you cannot run a big program of this kind in a mechanical, official manner. All of the personnel involved in the Akshaya Patra program come with a deep commitment of compassion and kindness for children. And so, it is that compassion that keeps us very highly motivated day after day to see that we do our tasks and duties with a lot of heart. ऐसे बड़े किचन हो तो सफाई कितनी खाली। ये देखो यार, ये होता है ना, ये देखो ना यार भाई, मैं कसम से मैं इमोशनल इधर हो गया कि बच्चा जो गरीब है वो भी वीआईपी खाना खा रहा है। आज भारत के स्कूल में आके उसको ये फील होने नहीं दिया जा रहा कि तू गरीब है। मेरा होता था ना, हम लोग तो इतने अमीर नहीं थे, 2 रुपए मिलते थे मुझे अपने टाइम पे, समोसा मिलता था तब 3 रुपए का, तो मैं लोगों के मुंह देखता होता था कि भाई साहब वो लोग खा रहे हैं और मैं इधर अकेला साइड पे बैठा हूँ। मुझे वो अपना टाइम याद आ गया। लेकिन इंडिया में देखो, वो गरीबों के लिए चीज ही खत्म कर दी। अगर अमीर बच्चा बिरयानी खा रहा है तो गरीब भी साथ बैठ के बिरयानी खा रहा है। यार वजह ये होता है देश का एक लीडर, जो एक देश का लीडर सही मिलता है। आप खुद सोच लो कि क्या अंदाजा है इसमें, तो क्या नहीं, यानी गरीब ही वो खाना खा रहा है जो एक अमीर भी खा सकता है। 20 लाखों का अगर रोज इंतजाम करना, लोग 2 मिलियन लोगों का इंतजाम, बच्चों का इंतजाम करना आसान काम नहीं है। वजह कैसा सिस्टम लगाया, कैसा उन्होंने डिजिटल सिस्टम लगाया हुआ है, क्या किचन है उनका, हर चीज एक लेवल पर बन रही है। 20 लाख लोगों को इन पाकिस्तानियों से 25 करोड़ लोगों का देश नहीं संभाल, उधर 140 करोड़ का देश, 80 करोड़ का पेट वो बंदा पाल रहा है। 20 लाख बच्चों को दिन का वो खाना खिला रहा है। वो क्या है, वो फरिश्ता है या भगवान की तरह से भेजा? वो खुद भगवान है यार, क्या है वो। इधर हमारे इस देश के अंदर जो गरीब बच्चा होता है ना, खुदा की कसम वो कोने पे बैठ, पहले तो पढ़ ही नहीं रहे, कोई अगर गलती से स्कूल के अंदर भी कोने पे बैठ के शक्लें देख रहा होता है बच्चों की कि वो ये खा रहा है, वो ये खा रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। क्या इनके इंतजामात हैं कवजात, क्या गाड़ियां निकल रही हैं, क्या वो गाड़ियां जा रही हैं, ओए होए होए होए, क्या बच्चों में जाके तकसीम हो रहा है, क्या बच्चे वो दुआएं दे रहे हैं, ये क्या वो सब हो रहा है। देखो ना, वर्ल्ड क्लास दुनिया के पहले नंबर का ये किचन है वजह, जो 20 लाख बच्चों का पेट पा रहा है, और मुफ्त, और साथ लेडीज काम कर रही हैं, औरतें काम कर रही हैं। सफाई सुथराई कितनी है, इतना बड़ा किचन हो, पहले तो सफाई सुथराई नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन सफाई का सिस्टम देखो, कितने लोगों को इस पे रोजगार मिला हुआ है, और जो बच्चों का पेट, वहां पर लाखों बच्चों का पेट पाला जा रहा है, वो अलग। ये सिर्फ मोदी जी और हिंदुस्तान में मुमकिन है, और किधर भी नहीं। और कहाँ है? मुझे एक देश इस दुनिया के अंदर बता दो मुझे बताया कि जिसके अंदर 80 करोड़ लोगों को खाना मिल रहा है, 20 लाख गरीब बच्चों को दिन का स्कूल के अंदर खाना मिल रहा है, वो भी फ्री। मुझे बता दो यार, कौन है? इधर हमारे पाकिस्तान में तो थोड़े से बच्चों को नहीं पेट पाला जाता हो यार इनसे। उधर देखो भाई, दुआएं कितनी मिल रही हैं। जो गरीब खा रहा है वो अमीर भी खा रहा है। मोदी जी ने ये भेदभाव खत्म कर दिया। हमारे इस देश के अंदर आज भी भेदभाव है। वाह यार वाह, कसम से क्या बंदा बोले। वजह मोदी जी ने जो सिस्टम किया अपने देश के लिए किए, एक लोग इनसे कोई चीजें, लोग मिसालें भी हम नहीं लेते ना, कोई इनसे सीख ले, वही ना, ये सीखनी चाहिए ना। पाकिस्तानी कुछ भी सीख लेते थे, अमल करते थे, कुछ पड़ा होता। चोर हमेशा चोर से सीखता है, अच्छे बंदे से नहीं सीखता। वो खुद गुर्बत में उसने जिंदगी गुजारी, वो जानता है कि मैंने किस तरह जिंदगी अपनी गुजारी है, तो लोग किस तरह गुजारे। गरीब बच्चा स्कूल में पढ़ने वाला, उसकी क्या सिचुएशन होती होगी जब लंच ब्रेक होती होगी, तो मोदी जी ने इसका ख्याल रखते हुए ये चीज चलाई होगी। बिल्कुल, ये 100% बात कर। और 20 लाख बच्चों को रोजाना, गरीब ही जानता है कि आखिर जब ब्रेक होती है तो कोने पे वो बैठा होता है, और अमीर बच्चों को देख रहा होता है कि वो जब चीजें खा रहे होते हैं, जिसके पास पैसे कैसे ना खाने के लिए। यही बात है। तो यार आपके क्या थॉट है भाई इस अमेजिंग मोदी जी के सिस्टम पर? इधर वीडियो खत्म कर देते हैं।